गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बी ए डिटेलिंग। आज है लास्ट 31 दिसंबर 2024 एंड उसके साथ इस डे के साथ बहुत सारी चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं कि मार्च 2024 में जो क्वेश्चंस आए थे, टॉपिक्स थे जीके और करंट अफेयर्स बनने के लिए, उनमें से कुछ क्वेश्चंस आपके लिए आज है इस वीडियो में। थोड़ा सा एक बार सुन के जाना। एग्ज़ाम से बिफोर सारे वीडियोस का प्लेलिस्ट एक दे दिया गया है, डीएवी मेंशन्ड है, उसको चेक कर लेना। सारा रीजनिंग एंड डीएवी में जो भी जीके बाय चांस अगर आते हैं 1-2 मार्क के, वहाँ पे आ सकते हैं। इंग्लिश के वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एंटोनिम, सिनोनिम्स, ये सब भी है, थोड़ा चेक करके जाओ। और उसके साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। जैसे ही हम न्यू ईयर में जाते हैं तो न्यू ईयर के साथ आपको जैसे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिले, यही मेरी विश रहेगी। सो लेट्स स्टार्ट आज का सेशन मार्च 2024 का। चलो फटाफट कर लेते हैं एक रिवीजन, क्विक रिवीजन। हु टुक ओथ एज द जुडिशियल मेंबर ऑफ लोकपाल? लोकपाल के जुडिशियल मेंबर होते हुए किसने शपथ ग्रहण किया था? ऋतुराज अवस्थी। ऋतुराज अवस्थी, who has been appointed by Microsoft as the new head of both Windows and Surface. Windows and Surface का कौन है Microsoft का न्यू हेड? पवन पवन धबलूरी। पवन धबुलुरी, who has acquired Lanco Amarkantak Power Limited, which has been approved by Competition Commission of India, CCI. Adani Power Limited. Adani Power Limited, who has been selected as the flag bearer for India at Paris Olympic 2024 में जो फ्लैग बियरर थे वो कौन थे? शरद कमल। शरद कमल। नेक्स्ट, who has been appointed as the new president of Federation of Indian Export Organization, Indian Export Organization, FIEO? ये हैं अश्विनी कुमार। A 900-year-old Kannada inscription belonging to the Kalyani Chalukya dynasty was discovered in a neglected state, Gangapuram. Gangapuram is located in which state of India? That is Telangana. 900 साल पुराना कन्नड़ इंस्क्रिप्शन जो कल्याणी चालुक्य डिनास्टी के और साम्राज्य के हैं, वो कौन से स्टेट पे पाए गए? गंगापुरम में पाए गए। और गंगापुरम मतलब गंगापुरम कौन से स्टेट का है? गंगापुरम एक जगह का नाम है जो एक स्टेट में प्रेजेंट है, और कौन सा है? तेलंगाना। Who has recently been appointed as the new Director General of Police of West Bengal? Director General of Police of West Bengal, Sanjay Mukherjee. Sanjay Mukherjee, who has taken charge as the President of India, Indian Steel Association, ISA. Indian Steel Association का किसने चार्ज लिया प्रेसिडेंट के लिए? नवीन जिंदल। नवीन जिंदल। नेक्स्ट, at which place is startup Mahakumbhi being organized? Startup Mahakumbhi being organized, New Delhi. Which team made the biggest team score to 77 runs in IPL history against Mumbai Indians? मुंबई इंडियंस के अगेंस्ट कौन सी टीम ने स्कोर किया है, सबसे बड़ा स्कोर किया है 277 आईपीएल की हिस्ट्री में? सनराइजर्स हैदराबाद। Who has recently been given the additional charge of the Ministry of Food and Processing Industries? Kiran Rijiju. किरण रिजिजू, मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, एडिशनल चार्ज, ठीक है, किरण रिजिजू। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ ऑफ द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, एनआईए? तो चीफ के नाते सदानंद वसंत देत और देते, ठीक है, सदानंद वसंत देते। सदानंद वसंत देते नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के चीफ। For the first time in its history of milk cooperatives in India, Amul's brand's fresh milk will be sold in which North American country? USA. USA. Who has recently been given additional responsibility as the governor in charge of Telangana? CP Radhakrishnan, ठीक है, एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी लिए एज गवर्नर इन चार्ज ऑफ तेलंगाना, CP Radhakrishnan. Which organization has connected the strategic Nimmu Padum Darcha in Ladakh by road? That is Border Roads Organization, BRO. Border Roads Organization, BRO. Nimmu Padam Darcha in Ladakh by road.
Which state police recently launched digital platform? एक डिजिटल प्लेटफॉर्म का नाम है त्रिनेत्र ऐप 2.0, त्रिनेत्र ऐप 2.0 फॉर क्राइम प्रिवेंशन एंड इन्वेस्टिगेशन। क्राइम प्रिवेंशन एंड इन्वेस्टिगेशन के लिए कौन से स्टेट का पुलिस ने लॉन्च किया एक डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र ऐप 2.0? दैट इज उत्तर प्रदेश। Who has recently been appointed as the new ambassador of India to Myanmar? So who has recently been appointed as? तो कौन सा अभी रिसेंटली कौन से ऐसे पर्सन हैं जिन्होंने रिसेंटली अपॉइंटमेंट लिया न्यू एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू म्यांमार? दैट इज अभय ठाकुर, अभय ठाकुर। देन नेक्स्ट वन इज द तमिली साई सौंदरराजन, अच्छा सौंदरराजन resigned from her post. She was the governor of which state? She also resigned from the post of lieutenant governor of पुडुचेरी, तेलंगाना, तेलंगाना। तमिलिसाई सौंदरराजन, रंजन मैंने सोचा था रजन है, ठीक है। Which app has been launched to make the election process easier for the disabled? Saksham, who has recently been appointed the chairman of the Central Board of Secondary Education by the central government. CBSE के chairman राहुल सिंह। ISRO successfully tested the landing mission of its reusable launch vehicle RLV from the Aeronautical Test Range ATR in Chalakere, Karnataka. What it is its name? Puspak. Sorry for the fumble. Puspak. ठीक है। Which team own the title of the second season of the Women's Premier League? WPL, IPL नहीं, WPL. So Royal Challengers Bangalore, who has recently been appointed as a new captain by Chennai Super King? ऋतुराज गायकवाड़, that is the Chennai Super Kings के new captain है। Name the para archer and Arjuna award winner who has been appointed as a national disability icon by the Election Commission of India, that is Sital Devi, ठीक है। Name the renowned poet who has been selected for the Saraswati Samman for the year 2023 for her poetic novel Rudra Satvikam, Malayalam? Prabha Verma. Next, name the former Tata Sons chairman who was honored with the prestigious P.V. Narasimha Rao Memorial Award for his outstanding philanthropic contribution. Ratan Tata ji, who has been appointed as a new ambassador of India to Russia. वो थे इंडिया टू म्यांमार, ओके। इंडिया टू रशिया के हैं विनय कुमार, नॉट विजय कुमार, विनय कुमार। What is the rank of India in the recently released Global Human Development Index? 134. What is the rank of India in the recently released World Happiness Ranking? देखो World Happiness Ranking 2021 to 2023 का दिया गया 121 है, ठीक है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 134 रैंक है और हैप्पीनेस रैंकिंग में, वर्ल्ड हैप्पीनेस रैंकिंग में 121 है। नेक्स्ट, which app has been launched by the Indian Space Research Organization to assist Gaganyaan crew? That is the Sakhi, Spaceborne Assistant and Knowledge Hub for crew interaction. Mahateri Yojana, Bandhan Yojana scheme, which provide rupees 1,000 per month as financial assistance to eligible married women, was started in which state? That is the Chhattisgarh. Former Indian President रामनाथ कोविंद जो थे उन्होंने एक हाई लेवल कमिटी सबमिटेड क्या था, रिपोर्ट बनाने के लिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वो रिपोर्ट किस लिए था? रिपोर्ट था वन नेशन वन इलेक्शन के ऊपर। हु इज़ द MD एंड CEO ऑफ फ्लाइट 91, ये गोवा वेस्ट एयरलाइन, वो कौन है? मनोज चक्को, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ प्रसार भारती, दैट इज नवीन कुमार सहगल। प्रसार भारती के न्यू चेयरमैन कौन है? नवीन कुमार सहगल। PM Narendra Modi laid the foundation stone of the chip fabrication unit of Tata Power Chip Semiconductor Fabrication Unit at Dholera. Dholera is located in which state? Gujarat, ठीक है।
Mojuli Mask, which recently got geographical indication tag, belongs to which of the following state? That is the Mojuli Mask Assam का है. Who has been elected as the new Chief Minister of Haryana? Naib Singh Saini. Naib Singh Saini. Next, in which state Prime Minister Narendra Modi inaugurated Sela Tunnel, world's longest twin land tunnel? Arunachal Pradesh. Sela Tunnel, याद रखना, Sela Tunnel, Arunachal Pradesh. Whom did President Draupadi Murmu recently nominate to Rajya Sabha? Sudha Murty. Who became the 14th player to play 100 test matches for India? Ravichandran Ashwin. Name the Indian author who has been awarded the prestigious Erasmus Prize 2024 by the Netherlands-based Premium Erasmianum Foundation for his significant contribution to the theme Imagining the Unthinkable. Amitav Ghosh. Which team won Ranji Trophy 2024 by defeating Vidarbha by 169 runs at the Wankhede Stadium in Mumbai? That is Mumbai. कौन सा टीम है? मुंबई टीम है. Who won the first prize in the National Youth Parliament Festival 2024? National Youth Parliament Festival NYPF. Yatin Bhaskar Duggal. At which place in Gujarat Prime Minister Narendra Modi inaugurated, that is Kochrav Ashram? कोचराव आश्रम साबरमती में ही हुआ था. With whom did Atal Innovation Mission and Niti Aayog collaboration to launch the Frontier Technology Lab FTL Meta? Former bureaucrats Sukhbir Singh Sandhu and that is Gainesh Kumar have been selected as election commissioner. Who has been appointed as the new Vigilance Commissioner in the Central Vigilance Commissioner? A.S. Rajiv. In which state Sansad Khel Mahakumbh 3.0 was organized? Sansad Khel Mahakumbh 3.0 हिमाचल प्रदेश में हुआ है. How many Vande Bharat trains are now running across India covering more than 250 districts of the country? 102. Which state government recently approved the green hydrogen policy in the state? Green hydrogen policy, Uttar Pradesh. At which place Asian River Rafting Championship on the Satluj River was organized from March 4 to March 9, 2024? Simla. Asian River Rafting Championship Simla में हो रहा है. State Bank of India has entered into an agreement with which company for the license and operation of cash management and transaction banking platform? iCashPro Plus. Oriono, that is a Orion Pro Solution. Oriono बोल सकते हो, Orion Pro Solution भी बोला जाता है. Name the former chief of naval staff from 1990 to 1993 who passed away on 15th March 2024. Admiral Lakshmi Narayana Ramdas. Who has become the first woman sniper of Border Security Force after completing an 8-week course? Suman Kumari. First woman sniper of Border Security Force. Then which missile was successfully tested by DRDO with multiple independently targetable re-entry vehicle technology recently? Agni 5. With whom has National Payments Corporation of India NPCI joined hands for conducting joint research on blockchain and artificial intelligence technology? Indian Institute of Science Bangalore. Where was the India's first small scale LNG unit inaugurated? Madhya Pradesh. Small scale LNG unit, Madhya Pradesh. Name the public sector enterprise under Ministry of Power GOI Government of India which has been conferred the status of Mini Ratna category 1 CPSC by Government of India, that is GRID India, Great India. On which island of Lakshadweep has the Indian Navy established its new base? लक्षद्वीप के कौन से आइलैंड में इंडियन नेवी एस्टैब्लिश किया है उनका न्यू बेस को? मिनिकोई आइलैंड. नेक्स्ट,
with which country will the Indian Coast Guard organized Sea Defender 2024? USA. Sea Defenders 2024 USA. Where was India's first green hydrogen plant established in the stainless steel sector, located at Jindal Stainless Limited, that is a Hisar. In which state did PM Modi inaugurate India's first underwater metro on the Hooghly River? ये तो पता ही चल रहा है, हुगली रिवर बोल दिया, वेस्ट बंगाल. Name the highest civilian decoration of Bhutan, which was conferred on the Indian Prime Minister Sri Narendra Modi by His Majesty the King of Bhutan at the Tendrel Thang Thimphu. That is the Order of the Druk Gyalpo. Risa was recently granted the GI tag. It is a tribal custom of which state? Tripura. Which team won the 2023-24 Pro Kabaddi League, defeating Haryana Steelers in the finals? Hyderabad. पुनेरी पल्टन. ठीक है, हरियाणा स्टीलर्स ने किसको डिफीट किया है? पुनेरी पल्टन को. इन व्हिच सिटी वाज द वर्ल्ड्स फर्स्ट वैदिक क्लॉक इनॉग्रेटेड? उज्जैन. नेम द जर्नलिस्ट हु हैव बीन awarded the Chameli Devi Jain Award for Outstanding Women Media Person for the year 2024. That is Grishma Kuthar and Ritika Chopra. तो ये आपके मार्च के कुछ इम्पॉर्टेंट जीके थे, करंट अफेयर्स थे, और ये सब आपको अभी के कमिंग एग्जाम्स में भी हेल्पफुल हो जाएगा बहुत ही ज़्यादा. सो ऐसे ही लगे पड़े रहे, और भी हम करते रहेंगे. सो थैंक यू सो मच. और जो न्यू व्यूअर्स है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, एंड जैसे हम लोग आगे बढ़े और भी और लोगों तक पहुंच सके. थैंक यू एंड राधे राधे. अच्छे से रहो, और न्यू ईयर के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं एडवांसली. कल भी हम लोग मिलेंगे. सो थैंक यू सो मच. और कुछ एफर्ट्स लग रहे हैं तो ज़रूर कमेंट में बताइए कि क्लास कैसा लगा, क्योंकि ये क्विक रिवीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, उस अकॉर्डिंग.